This is lecture number 7, and we are going to solve traction theory and mechanics of tractor chassis from 2012 to 2008 in this session, right? Question number 15. इससे पहले हम लोग सब सॉल्व कर चुके हैं 2012 से पहले, राइट? A two-wheel drive tractor weighing 15.84 kilonewton with wheelbase of 2160 mm has the static weight divided between the front and rear axle in the ratio of 30:70 on a horizontal level surface, right? So front axle पे लोड कितनी आ रही है 30% and rear axle पे 70% static load distribution 30:70 in front and rear axle respectively. The hitch point is at a height of 700 mm from the ground and at horizontal distance of 120 mm to rear side from the center of rear axle. Pull acts at an angle of 12 degree downward from the horizontal. The maximum pull in kilonewton when the front wheels would just start rising from the ground. So this is related with overturning, right? So this is क्रिटिकल कंडीशन. पुल हमें द मैक्सिमम पुल कितना होना चाहिए कि यहां पर रिएक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए. सो दिस इज द केस व्हेन व्हील्स, फ्रंट व्हील्स वुड जस्ट स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड. जब ये उठने वाला होगा तो उस समय रिएक्शन 0 होगी, right? So from this case dynamic reaction on front wheel is 0, right? Given है. Take moment of all forces acting on the tractor about this point O. This is point O. This must be 0. Moment equilibrium equation we write. Net moment of all forces acting on tractor about point O must be 0 for rotational equilibrium, right? इसके पाउट रोटेट ना कर जाए. Dear students, RFD into L2. This is causing anti-clockwise moment about this point O. RFD into L2. W into L1 causing clockwise moment. So it is negative. W into L1. RRD is passing through same point, its moment will be 0. Pull is inclined by an angle alpha with this horizontal. So it has two components, P cos alpha and P sin alpha. P cos alpha is acting at height yn. It is causing anti-clockwise movement. It is taken as positive in this particular problem. Plus P cos alpha into yn. P sin alpha is also causing anti-clockwise moment about this point O. It is also positive. P sin alpha into S, they must be 0. Because we are going to calculate pull when the front wheels
would just start rising from the ground. So this is the case, so this will be 0. Right? So remaining values we will put here to get the answer. अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये हमारा जो है ना एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट हो गया. अब इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देते हैं. राइट? Weight of the tractor is W given. Wheelbase L2 in meter is 2.16 meter. 30% of this tractor weight is actually acting on front wheels. So, a static reaction by the ground on front wheels in static condition, 30% of the total weight of the tractor. Right? And we know this is equal to WL1 upon L2. L2 known, so we can calculate WL1. WL1 is required here. या L1 कैलकुलेट करके W ऑलरेडी हमारा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो WL1 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा. राइट? Yn given, the hitch point is at a height of 700 mm from the ground, so 0.7 meter Yn, and at a horizontal distance of 120 mm to the rear side from the center of the rear axle, so S, this distance is also given here. Pull X at angle of 12 degree downward from the horizontal, so alpha is given. बात समझ में आया? अब we have to calculate P. Yn given, S given, alpha given, already we have calculated. WL1, we get the value of P. So this is maximum pull that reduces ground reaction on front wheels to 0. Right? इससे ज्यादा पुल हम अप्लाई नहीं करेंगे. पुल अप्लाई करेंगे टर्निंग हो जाएगा. क्लियर? तो वही हमने यहां पर सॉल्व कर दिया है सब कुछ, सेम चीज. आइए आगे बढ़ते हैं. पहले ये लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस आते थे. एक ही क्वेश्चन के एक इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द सेम इंफॉर्मेशन वी हैव टू क्वेश्चंस. राइट? फर्स्ट करेक्ट होगा, देन सेकंड को चेक किया जाएगा. पहले आता था ये फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही भी है, इसके मार्क्स नहीं दिए जाते थे. फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, तो फर्स्ट का मार्क्स मिल जाता था और इसमें निगेटिव नहीं होता था. ये लिंक्ड टाइप क्वेश्चन पहले आते थे 13-14 के पहले. A towed pneumatic wheel width to diameter ratio of 0.3. B upon D, 0.3, is to be rolled on a leveled concrete surface. Total wheel load is 2000 Newton. व्हील का लोड दिया हुआ है, व्हील पर लोड कितने लग रहे हैं. एंड B by D of wheel is also given. B width, D overall diameter. Right? The force in Newton required to roll the wheel on the horizontal concrete surface would be. In order to roll this wheel, required force is desirable. So this is the case. This is wheel. Force through axle is acting. This is called H. Load on the wheel is W. This is reaction.
In a vertical force equilibrium, load acting on wheel is equal to reaction provided by ground to this wheel. When this wheel starts rolling on the ground surface, there is certain deformation existing here that will cause motion resistance force opposite to the direction of travel, and it is called total force or motion resistance force. Dear students, in order to roll this wheel, the requirement of this H is just TF. If this wheel has force H in the direction of travel equals to resistance force, motion resistance force opposite to the direction of travel, then it will roll. So question में क्या पूछा जा रहा है? The force in Newton required to roll wheel on the horizontal concrete surface would be. So this TF is required here. Right? So friends, TF is hidden inside rolling resistance ratio, rho. Motion resistance ratio, rho. TF upon load acting on the wheel. Motion resistance force upon load acting on the wheel. So TF upon W is rolling resistance ratio. Clear? This is not given in the problem. So we have formula. So for this we have two criteria. One by Weismar-Luth and another Braixius. For Braixius, deflection of the tire is needed. So here deflection of the tire is not given. So we'll use Weismar-Luth criterion to calculate traction performance parameter, rho, mu, इन सबको निकालने के लिए हम Weismar-Luth का इस्तेमाल करेंगे. So as per Weismar-Luth prediction of rolling resistance ratio, we can write rho is equal to 1.2 upon Cn plus 0.04. Now Cn is required here. So for the Cn, we look inside this question. There is no information regarding wheel numeric. Again read this question carefully. Concrete surface. So this is hard surface. For hard surface, Cn would be very high. And it is in denominator. Right? 1000 में वैल्यू होती है Cn की. तो ये क्या हो जाएगा? Almost 0 आएगा. So guys, we can write TF upon W is equal to 0.04 TF W into 0.04, and TF is actually H, force required to roll this wheel on concrete level surface. तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट होगा. The minimum slope in degree of the concrete surface with respect to horizontal at which the wheel itself will start rolling downward is. अब जो है ना, क्योंकि rolling resistance force act हो रहा opposite to the direction of the travel, तो हम incline देंगे. So due to this inclination, component of weight is also acting parallel to inclined plane, that will help to overcome rolling resistance force. रोलिंग में जो रेसिस्टेंस आ रही है उसको ओवरकम किया जा सकता है. बात समझ में? इंक्लाइनेशन प्रोवाइड करके. सो दिस इज द केस ऑन लेवल ग्राउंड. वी हैव ऑब्टेन द रिजल्ट. इन द सेकेंड केस वी हैव टू कैलकुलेट inclination, right, of the concrete surface. ये
ये सिचुएशन है. So here, due to inclination of surface, weight is acting vertically downward. It has component in this direction. So here wheel is rolling like this, and TF is rolling resistance force acting opposite to the direction of motion of this wheel. Wheel is center mass of the wheel is moving down the inclined plane. So rolling resistance force or motion resistance force acting on the wheel up the inclined plane. So W sin alpha is equal to TF. तो कितना इंक्लाइनेशन हो कि ये खुद से जो है ना व्हील रोल करने लगे. राइट. सो इंक्लाइनेशन कॉजेस कंपोनेंट ऑफ W down the inclined plane, and this is motion resistance force. So W sin alpha TF. इंक्लाइनेशन की वजह से ही ये केवल मूव करे. इन द फर्स्ट केस, इन ऑर्डर टू रोल द व्हील, we need H amount of force which is equal to TF in order to roll this wheel. But here, component of weight down the inclined plane is going to roll this wheel. This is possible if this is at least equal to TF. So this will roll with constant velocity. W sin alpha is equal to TF. Right. So W is given in the problem. We have to calculate alpha. We need TF, towed force in this case. Right. So towed force upon reaction on the wheel. W is this, but we need reaction here. This is called rolling resistance ratio. Rolling resistance ratio, towed force upon reaction by the ground on the wheel. ये होती है जब ये जीरो था, फ्लैट था, हॉरिजॉन्टल था, उस केस में R और W इक्वल था. बट हियर R एंड W दे आर नॉट इक्वल. R इज इक्वल टू W cos alpha. So TF upon W cos alpha, and this is Cn upon 1.2 upon Cn 0.04 as per Wismar-Luth. So it is only 0.04 because Cn would be very high for concrete surface. So 1 upon 2 upon Cn will be almost 0. So rolling resistance ratio in this case is 0.04. So here TF we have calculated W cos alpha into 0.04. And TF is equal to W sin alpha, right? So from this we calculate tan alpha and alpha simply. So this is good question, conceptual. Again we have linked answer question. A 37 kilowatt two-wheel drive tractor weighing 20 kilonewton with a wheelbase of 2.1 meter is having the option to be fitted with either this tire and this tire at rear axle. So we have two options of rear wheels. Rear wheels के दो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, right? First and second, right? So this is 12.4. This is section width B in inch. 28 rim diameter, and this is ply rating, 12 ply rating, right? तो हमें केवल जो है ना विड्थ चाहिए और रिम डायमीटर. दिस इज स्पेसिफिकेशन ऑफ टायर. टायर को आइडेंटिफाई करने का ये कोड है, राइट? सो टू डिफरेंट रियर व्हील्स अवेलेबल है. दोनों को हमें 1 by 1 फिट करना है, अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है. The ratio of section height h upon
B, section width for all tires 0.075. On a level ground, the weight distribution on the front and rear axles is 35% and 65% of total tractor weight. Right? फ्रंट पे 35% ट्रैक्टर वेट का और रियर पे 65% ऑफ ट्रैक्टर वेट. कोन इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज राइट 1200 किलो पास्कल. तो अपने पास जो है ना क्या क्या इंफॉर्मेशन है यहां से दोनों टायर का 1 बाय 1 करके देखेंगे. सेक्शन विड्थ, टायर का जो ना विड्थ हो गया राइट. दिस इज रिम डायमीटर. फर्स्ट टायर से इंफॉर्मेशन आ गई, सेकेंड टायर से ये सेक्शन विड्थ, रिम डायमीटर. द मोशन रेसिस्टेंस रेशियो ऑफ ईच ऑफ द रियर व्हील when fitted with the above mentioned tires at normal tire pressure, inflation pressure while moving on level ground will be. मोशन रेसिस्टेंस रेशियो दोनों टायर का कैलकुलेट करना है, टोट फोर्स निकालना है. टोट फोर्स बात समझ में आ गया. रियर व्हील्स में फिट होनी है. टोट फोर्स अपॉन रिएक्शन ऑन रियर व्हील राइट. टोट फोर्स अपॉन रिएक्शन ऑन rear wheel is equal to rolling resistance ratio. Clear? So we have to calculate total force in this case also in this case. दो आंसर है यहां पर, दोनों केस में हमें निकालना है. रो टाइम्स रिएक्शन ऑन रियर व्हील. रिएक्शन ऑन रियर व्हील जो लोड आ रही है उससे हमारा कैलकुलेट हो जाएगा. डायनेमिक रिएक्शन जनरली लिखा जाता है लेकिन पुल वगैरह तो है नहीं, तो पुल नहीं है तो फिर जो है ना डायनेमिक रिएक्शन ऑन रियर व्हील सिंपली W L2 माइनस L1 अपॉन L2 होगा. उस सबकी जरूरत नहीं है, पुल है ही नहीं, तो जो वेट आ रही है उसी के करस्पॉन्डिंग हमें टोट फोर्स निकालना है. वही वेट सॉइल रिएक्शन के फॉर्म में लगाएगा. तो रियर व्हील पर जो रिएक्शन होगी दैट इज द लोड एक्टिंग ऑन द रियर व्हील, स्टैटिक कंडीशन और इन डायनामिक कंडीशन, बिकॉज वेट ट्रांसफर इज नॉट टेकिंग प्लेस बिकॉज इम्प्लीमेंट इज नॉट अटैच टू दिस फैक्टर. क्लियर? वी नीड रो. विजमर लूट लगाएंगे 1.2 अपॉन CN 0.04. CN is given 1200 किलो पास्कल राइट. तो यहां पर पुट करेंगे. पुट करने के बाद हम लोग ये TF हमारा निकल जाएगा. फिर उसी तरह दूसरे केस में निकालेंगे. CN कैसे निकालेंगे? CN नहीं दिया, कौन इंडेक्स नहीं दिया. विल न्यूमेरिक, वी नीड विल न्यूमेरिक. CN नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, विल न्यूमेरिक. सो कौन इंडेक्स BD अपॉन load acting on rear wheel. डन. तो ये निकाल के तब ये निकालेंगे, फिर हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा. BD ओवरऑल डायमीटर 1.062 रिम डायमीटर प्लस 2 टाइम्स सेक्शन हाइट. H upon B is given. B is given here for this tire. इंच में, उस सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मीटर में कन्वर्ट करो उसे B को. देन H कैलकुलेट करो, यहां पुट करो. DR जो है ना गिवन है 28 इंच, मीटर में कन्वर्ट करो. D कैलकुलेट हो जाएगा, फिर D यहां पुट करो. राइट? यही प्रोसेस है. इट्स वेरी सिंपल. सो W 20 किलो न्यूटन, L2 गिवन. Reaction on rear wheel 65% of the weight of the tractor 13 kilonewton. Reaction on front wheel 35% weight of the tractor 7 kilonewton. For rear wheels ये अगर ये फर्स्ट वाला हमारा rear wheel फिट किया गया, so here this is section width in inch, B in inch, convert this into centimeter, finally in meter. Rim diameter, this is rim diameter
inches. So convert this into meter. Aspect ratio, height upon width, h upon b, 0.75. So from this, b is given here, this is b, so here, section height this. Overall diameter of the tire, this is the formula, and we get overall diameter. Now we calculate wheel numeric, CIBD upon RR by 2, सिंगल व्हील की कैलकुलेट की गई, सिंगल व्हील की, रियर व्हील्स 2 है तो सिंगल रियर व्हील पर कितने आएगा, टोटल रिएक्शन बाय 2, सिंगल व्हील का रिएक्शन. So this is wheel numeric for each rear wheel. Rolling resistance ratio, this upon this, 1.2 wheel numeric this, ये हमारा वैल्यू हो गया रोलिंग रेसिस्टेंस रेशियो. रोलिंग रेसिस्टेंस रेशियो निकाले, देन जो है ना आप क्या कैलकुलेट करना था, मोसर रेसिस्टेंस रेशियो ऑफ, हाँ तो कैलकुलेट हो गया. मोसर रेसिस्टेंस ईच ऑफ द रियर व्हील्स अलग, एक एक सिंगल का, इसीलिए सिंगल पर लगने वाले लोड को रख के हमने जो है ना व्हील न्यूमेरिक कैलकुलेट किया है. बात समझ में आ गई, क्लियर. ये RR by 2 लिखा है तो सिंगल व्हील का जो है ना कितना लोड लगेगा वो हमने यूज किया है, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन सॉइल के द्वारा होगी, राइट. तो सिंगल का हमें कैलकुलेट कर लिया. अब इसी तरह जो है ना रियर व्हील में अगर सेकेंड टायर फिट किया गया तो उसके करस्पॉन्डिंग सिंगल रियर व्हील पर, सिंगल रियर व्हील के लिए रोलिंग रेसिस्टेंस रेशियो क्या होगी, कैलकुलेट कर सकते हैं. सेक्शन विड्थ this and this is in meter, rim diameter 28 inches, this is in meter. Aspect ratio h upon b given, h is this overall diameter of the tire, wheel numeric for each of the rear wheels, CIBD upon load acting on single rear wheel. So total reaction RR है जो 65% आ रही है उसका by 2 होना चाहिए, 13 by 2. तो this is rolling resistance ratio सिंगल रियर व्हील पर, ये आपका कैलकुलेट हो गया. सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, नेट ट्रैक्शन डेवलप्ड इन किलो न्यूटन बाय द रियर व्हील्स व्हेन फिटेड विथ सेकेंड टाइप ऑफ टायर एट नॉर्मल इन्फ्लेशन प्रेशर ऑन अ लेवल ग्राउंड विथ 15% व्हील स्लिप विल बी. नेट ट्रैक्शन डेवलप्ड बाय, नेट ट्रैक्शन हमें निकालना है, नेट ट्रैक्शन. तो नेट ट्रैक्शन कोएफिशिएंट म्यूजी माइनस रो, इसके लिए फॉर्मूला है विजमर लूथ के अकॉर्डिंग, इसके लिए भी फॉर्मूला ये निकल गया. नेट ट्रैक्शन फोर्स H अपॉन टोटल लोड एक्टिंग ऑन बोथ रियर व्हील्स, म्यूजी माइनस रो. तो यहां से H हमारा कैलकुलेट हो जाएगा. नेट ट्रैक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ग्रॉस ट्रैक्शन कोएफिशिएंट माइनस रोलिंग रेसिस्टेंस रेशियो, दिस इज नेट ट्रैक्शन फोर्स अपॉन, वो दोनों रियर व्हील से है इसीलिए दोनों का जो है वेट निकाला, या दोनों सिंगल सिंगल का निकाल कर नेट ट्रैक्शन एक व्हील से कितना हुआ फिर दूसरे से कितना हुआ ऐड कर दीजिए तो वही तो बात होगी ना, दोनों सेम आइडेंटिकल है, दोनों पर लोड सेम आ रही है, बोथ रियर व्हील्स आर एक्सपीरियंसिंग सेम अमाउंट ऑफ tractor load, right. So both have same ground reaction, right. तो हाफ करके करो, RR by 2 कर दो, उससे H निकालो, एक व्हील का हो गया, फिर एक और निकालो, दोनों को ऐड करो तो बात तो वही आएगी ना. या दोनों का ही वे रिएक्शन हम लेकर टोटल रिएक्शन कितनी आ रही है बोथ रियर व्हील्स पर, उससे कितना नेट रिएक्शन फोर्स, नेट ट्रैक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, राइट. सो सिंपल सा है, म्यूजी एंड रो का फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है. ग्रॉस ट्रैक्शन कोएफिशिएंट, ग्रॉस ट्रैक्शन फोर्स अपॉन RR, दिस इज द फॉर्मूला 0.751 माइनस e raised to the power माइनस 0.3 CNS. व्हील न्यूमेरिक हमने जो सेकेंड टाइप के टायर के लिए कैलकुलेट कर लिया, स्लिप गिवन इन द प्रॉब्लम ये निकल गया. नेट ट्रैक्शन कोएफिशिएंट म्यूजी माइनस रो, सेकेंड टाइप के टायर के लिए
मोशन रेसिस्टेंस रेशियो और रोलिंग रेसिस्टेंस रेशियो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए है, इसलिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने निकाल लिया, तो म्यू जी माइनस रो म्यू हो गया, और म्यू एच अपॉन आर आर है, तो एच की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना आएंगे, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। A two-wheel drive tractor is pulling a load of 12 kilonewton horizontally on level surface at a forward speed of 5 km per hour. कितना लोड पुल कर रहा है वो दिया हुआ है, यही ड्राफ्ट हो गया, राइट। नेट ट्रैक्शन फोर्स भी कर सकते हैं। द रोलिंग रेडियस ऑफ ट्रैक्शन व्हील and wheel slip are given, rolling radius and slip. If the rear axle torque is 9 kilonewton meter, the traction efficiency, this is the formula of traction efficiency, h upon f 1 minus s. H is given, we need f, we know the gross traction force into rolling radius is equal to axle torque. So from this we calculate f इन न्यूटन, उसको लेके यहाँ पर पुट कर देना है। आर इज गिवन, तो यहाँ पुट कर दीजिए, स्लिप गिवन है, फ्रैक्शन में रखिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? कौन इंडेक्स जो है ना आपको पास्कल, किलो पास्कल में दिया था, पास्कल में यूज करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, राइट। ध्यान दीजिएगा ये चीज। A rear wheel driven tractor weighing 20 kilonewton has 40% of its weight supported by the front wheels. 40% tractor weight is supported by front wheels. The tractor is pulling a trailed plow with a forward speed of 5 km per hour on flat line. The plow exerts a drawbar pull of 8 kilonewton with the line of pull making an angle of 15 degree with the horizontal in vertical plane. The drawbar hitch height is 500 mm. तो जो इंफॉर्मेशन दिया, W दिया हुआ है, ट्रैक्टर वेट 40% ऑफ इट्स वेट सपोर्टेड बाय द फ्रंट व्हील्स, 60% जो है ना रियर पर आ रही, 40% फ्रंट पर आई है, स्टैटिक। तो RFS स्टैटिक रिएक्शन बाय द सॉइल ऑन फ्रंट व्हील्स, ट्रैक्टर वेट का 40%। दिस द ट्रैक्टर इज पुलिंग a trailed plow with a forward speed. Plow exerts this the coefficient of traction developed by the tractor for this operation is, coefficient of traction हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। so RFS is this, so W L1 upon L2 is equal to 8. Coefficient of traction, rear wheel drive tractor has coefficient of traction H upon dynamic reaction on rear wheel, ये मुझे चाहिए। और H जो ड्राफ्ट कितना होगा, जितना पुल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, पुल इज इंक्लाइंड, सो P cos अल्फा इज रिक्वायरमेंट, इतना जो ना ड्राफ्ट होना चाहिए, नेट ट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, तभी उस पुल को ये खींच पाएगा। So H P cos alpha, वही है ना, सेम P cos alpha, because this is pull acting at an angle alpha. So इस पर जो है ना नेट हमारा मिलना चाहिए, वो कितना हो, P cos alpha, तभी ये ट्रैक्टर आगे की तरफ जाएगा। P is given 8 kilonewton, YN height of the hitch point given, S is not given, so we'll consider location of hitch point on a line passing to rear axle center. A rear axle center है and this is the hitch point. हाइट तो पता है लेवल सरफेस से, YN is known here, but S नहीं पता था, तो हम जो है इसी लाइन पर S को एज्यूम करेंगे, हटके होता था ना इन जनरल, लेकिन इसी पर एज्यूम करेंगे, S 0। डायनेमिक रिएक्शन ऑन रियर व्हील, स्टैटिक रिएक्शन ऑन
rear wheel plus P sin alpha plus this weight transfer, right? 8 kilonewton total tractor weight, 20 kilonewton, 8 kilonewton जो है आपको फ्रंट व्हील्स पर लग रहे हैं स्टैटिक का। तो जो है ना सॉइल रिएक्शन फोर्स ऑन रियर व्हील इन स्टैटिक कंडीशन क्या हो जाएगा, कितना वेट ट्रैक्टर का स्टैटिक कंडीशन में रियर व्हील्स पर आएगा, 12 किलोन्यूटन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्विलिब्रियम से। बात समझ में आया? सो दिस इज 12, पेज गिवन, अल्फा गिवन, ये सब कुछ हमारा कैलकुलेट होके आ गया। सो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन डेवलप्ड h upon which is equal to p cos alpha, this is your answer. So मुझे कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन निकालना था, तो ट्रैक्शन इज डेवलप्ड बाय रियर व्हील्स। रियर व्हील्स नेट पुल कितना जो डेवलप करेगा, नेट पुल जो h है वो कितना डेवलप करेगा ताकि पुल के साथ ट्रैक्टर मूव कर पाए, p cos अल्फा के इक्वल। तो h अपॉन, और उस समय जो है रनिंग कंडीशन में रिएक्शन ऑन रियर व्हील इन डायनेमिक कंडीशन, तो रिएक्शन ऑन रियर व्हील इक्विवेलेंट रियर व्हील इन डायनेमिक कंडीशन, दिस इज योर net traction coefficient and it is p cos alpha upon, ये जो कैलकुलेट करके लाए हैं आप RRD पुट कर दीजिए, p गिवन अल्फा गिवन, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेसिस्टेंस, रिएक्शन मोशन रेसिस्टेंस फोर्स ऑन रियर व्हील अपॉन डायनेमिक रिएक्शन ऑन रियर व्हील्स। तो ये जो ना कंपैक्ट एंड कंक्रीट हार्ड सरफेस पर मूव करता हो तो उस केस में CN क्या हो जाएगा, हाई होगा, और फर्स्ट वाला टर्म ये इतना आप ले सकते हैं। तो कितना जो है ना इस पर एक्ट हुआ वो हमारा कैलकुलेट हो गया। मोशन रेसिस्टेंस, रिएक्शन फोर्स, सॉइल रिएक्शन फोर्स ऑन फ्रंट व्हील इन डायनेमिक कंडीशन, फॉर्मूला है स्टैटिक कंडीशन में से इतना सब्सट्रैक्ट हो जाती है, ये कैलकुलेट हो गया। टाउट फोर्स ऑन फ्रंट व्हील यानी मोशन रेसिस्टेंस फोर्स, सो 0.04 टाइम्स दिस वैल्यू, डायनेमिक कंडीशन में कितना जो है ना हमारा रिएक्शन है। ग्रॉस ट्रैक्शन फोर्स, सो रियर व्हील्स हैव टू क्रिएट नेट पुल ऑफ दिस वैल्यू h प्लस जो आपका जो ना पीछे से जो लग रहा है, ये देखिए p cos अल्फा, p cos अल्फा चाहिए उसे, p cos अल्फा प्लस TFR प्लस TFF, p cos अल्फा पीछे की तरफ लग रहा है, TFR मोशन रेसिस्टेंस फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन रियर व्हील, TFF मोशन रिएक्शन फोर्स, मोशन रेसिस्टेंस फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन फ्रंट व्हील। So total traction force developed by rear wheels, because this is two-wheel drive tractor, rear wheel is powered, so rear wheel is actually creating traction force. So gross traction force कितना होना चाहिए, कितना पुल हॉरिजॉन्टल लग रहा है, कितना मोशन रेसिस्टेंस फोर्स रियर व्हील पर लग रहा है, फ्रंट व्हील पर कितना लग रहा है, टोटल को ऐड करते हैं, दिस इज द ग्रॉस ट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? सबको ऐड कर दो। TE traction efficiency, h upon f into 1 minus s, put the value of all terms here, you will get the answer. बात समझ में आया?